Namaskar. Today we shall discuss on SCRA 1956, Securities Contract Regulation Act 1956. It is a part of Social Auditing NISM book, chapter 11.1, and at least 1 to 2 questions comes from this chapter, and you have to read thoroughly time and again for passing the social audit. So I am also a registered valuer and a member of monitoring committee of AAR, just for information. Now, Securities Contract Regulation Act 1956 is an act to prevent undesirable transaction in securities जो हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, तो उसमें authenticity of the transaction should be maintained and undesirable transaction should not be there. So the act prevent all these type of transactions which are undesirable. Regulating the business of dealing therein. So stock exchanges जिसके द्वारा व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है, उसको रेगुलेट करना इसी एक्ट के अंदर आता है. And providing for certain matters connected there. So मेन ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो कनेक्टेड चीजें रहती हैं, कनेक्टेड मैटर्स रहते हैं, वो भी इसी में आएंगे. Now it provides for direct and indirect control of virtually all aspects of security trading and the running of stock. मतलब ओवरऑल वर्चुअली मीन्स एक बड़ी छतरी, बिग अम्ब्रेला. सो ऑल एस्पेक्ट्स जो भी सिक्योरिटी ट्रेडिंग में है, स्टॉक एक्सचेंज रनिंग में है, उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल भी है, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी है. ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेटरी जुरिडिक्शन देता है, पावर देता है कि वह स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर रेगुलेटरी जुरिडिक्शन है थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूड. उनको रिकॉग्नाइज भी करना है कौन सा चलेगा स्टॉक एक्सचेंज, कौन सा नहीं चलेगा, और उनके ऊपर कंटिन्यूड सुपरविजन है. कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटी. कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कब कब कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाएगा, T+1 है, T+0 है, सब तरह की चीजें इसी एक्ट के अंदर आती है. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो लिस्टिंग जब स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है, उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करानी है, क्या ऑथेंटिसिटी है, कैसे ड्यू डिलिजेंस रहेगा, क्या क्या पेपर सबमिट करने हैं, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेटरी जुरिडिक्शन प्रोवाइड. Now, a transaction in securities between two persons is essentially a contract. So, just like a contract of law, it is within two persons that one may contract between the two to execute a transaction. So, transaction in securities is also a contract of law, and that specifically applies in the case of securities contract also. Now, कुछ probable questions I have tried to frame. So, what is the main objective of Securities Contract Regulation Act 19? To promote speculative trading. नहीं, speculative trading तो आप कर ही नहीं सकते, किसी को तो रोकना ही है. To regulate business dealings in securities and prevent undesirable transactions. So this may be a probable answer. To promote listing of securities on stock exchanges. इससे कुछ लेना देना नहीं है, जितने लोग कराना चाहे कराएं, जो ऑथेंटिक होगा, जो पेपर पूरे होंगे, जो रूल्स और रेगुलेशंस को मानेगा, उसकी ही लिस्टिंग होगी. एंड टू प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव्स फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन. ऐसा भी नहीं है जितनी ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, उल्टा गवर्नमेंट टैक्स
ज्यादा जाएगा। सो आंसर इज बी, टू रेगुलेट business dealing in securities and prevent undesirable transaction. So I have tried to write here in the explanation which is a part of the study material. तो इसी के बीच में से ये आंसर आया है। Securities Contract Regulation Act 1956 is an act to prevent undesirable transactions in securities by regulating the business of dealing therein and providing for certain matters connected there. So we have to the material read again and again, and we have to read in between the lines because questions may come from there. A small piece of information, if we leave, we can lose 1 or 2 months. Now, how does the Security Contract Regulation Act 1956 contribute to the regulation of security trading? By encouraging unregulated transaction, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, बेकार है। अनरेगुलेटेड ट्रांजेक्शंस को तो करना ही नहीं है, इंसेंटिव ही नहीं दिया जाता है। सो बाय गिविंग गवर्नमेंट रेगुलेटरी जुरिडिक्शन ओवर स्टॉक एक्सचेंज, कंडक्ट इन सिक्योरिटी एंड लिस्टिंग। तो इसका काम क्या है? गवर्नमेंट को रेगुलेटरी जुरिडिक्शन प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंजेस पर, कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज पर और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज पर। And by allowing stock exchange to operate independently without government oversight, तो independent stock exchange तो नहीं है भैया, that is compulsory under the government supervision. So answer is C, by giving government regulatory jurisdiction over stock exchanges, contracts in security and listing of securities. So I have tried to write the explanation here from the part of the study material. So it gives central government the regulatory jurisdiction over stock exchanges through a process of recognition and continued supervision, contracts in securities and listing of securities on stock. Which government body has regulatory jurisdiction over stock exchanges, contract in securities and listing of securities under the Securities Contract Regulation Act 1956? तो आरबीआई नहीं है, वह तो बैंकों को सुपरवाइज करती है। सेबी ये कैपिटल मार्केट को सुपरवाइज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सबसे ऊपर की बॉडी है और सीबीडीटी टैक्स को देखती है। तो आंसर इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ what does the Securities Contract Regulation Act 1956 provide for in relation to stock exchanges? Direct and indirect control through recognition, continued supervision, complete autonomy without the government intervention, tax exemption for stock exchanges, promotion of speculative transaction in trading practice. तो बी सी डी तो देखने से ही आंसर गलत रखते हैं, तो ए वुड बी दी आंसर, direct and indirect control through recognition and continuous. So explanation means this act provides for direct and indirect control of virtually all aspects of securities trading and the trading of stock. Now, according to the act, which is securities contract, any business transaction, a contract relating to real estate, a transaction in securities between two persons, a contract involving only government security. Because we are dealing here in the security, we are talking about the security, the chapter is related to security. So answer is C, a transaction in security between two persons. So from the study material, the explanation is like that: a transaction in securities between two persons is essentially a contract, and this law that specifically applies in the case of securities contract. सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त ये मनमोहन जिंदल, एक्स कैनारा बैंक हूँ और सोशल ऑडिटर एंड
RBI रजिस्टर्ड वैल्यूर इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंस के लिए और पेशेंस। नमस्कार।